आवाज आ रही है बच्चों? ऑडिबल? नहीं? पूछना? नहीं? My voice is clear? Sir, your voice is very low. It's not clearly audible. साक्षी, दूसरा हेडफोन लाके दे। Now, is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. नहीं रहने दो. Motion in a straight line. From today, this class will be regular. Okay. And in evening also, we will start class 11th portion. Chinmay and Sanjana, you please inform me which chapter we should start in the evening in the Babo sir class. Okay. Now, let's solve this question. So today we are learning use of this. If we differentiate x, we get velocity. And if we differentiate velocity, we get acceleration. अब dt को उस तरफ ले जाओ. dv now integrate both the side. U to v. So you get change in velocity. So when you integrate acceleration with respect to time, you get change in velocity. And v is equal to dx by dt. When you integrate velocity with respect to time, you get change in position. x2 minus x1. Like this, you can complete this flow chart. And there is another formula. Acceleration is dv by dt and acceleration is also v dv by dx. We have two formulas for acceleration. Okay. Remember this. Now, average velocity is total displacement upon total time and average speed is total distance upon total time. तो जब भी एवरेज स्पीड पूछे यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ओके. क्योंकि पार्टिकल कई बार अपना डायरेक्शन बदल लेता है. लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 1. A particle moves along a straight line and its velocity as function of time (60 minus 3t square). Find average velocity and average speed in first 4 seconds. Okay, it is very easy to find average velocity बच्चों. कुछ उसमें खास है नहीं. सीधे सीधे आ जाएगा. निकाल के बताओ आप लोग. How will you find average velocity? जहां तक मुझे समझ आ रहा है from the graph,
बच्चों, look at the velocity. अच्छा, एक चीज और, इसको ज्वाइन कर देना लैपटॉप से, मेरी मीटिंग। बच्चों, इससे एक बात तो क्लियर है कि वेलोसिटी 0 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। Am I right? देखो ना, Yes, sir. it means at t is equal to 2 second velocity is 0. If t is greater than 2, then velocity is negative. See, velocity is positive when t is less than 2 second, and velocity is negative when t is greater than 2 second. Am I right? Yes. अभी आपको इतना देखना पड़ेगा, if velocity as a function of time is given, you need to understand what type of graph velocity have. This is the velocity time graph. After 2 second, velocity becoming negative means till 2 second particle will go away from origin. Till 2 second particle will go away from origin, and after 2 second particle will start coming back towards origin. Okay, that's why this question is not at all easy to find. I mean average speed. However, it is very easy to find average velocity. Let's calculate average velocity. अभी हमने क्या किया? We have not calculated anything. We are just trying to understand velocity. Okay, बच्चों? We are just trying to understand velocity. And हमने velocity में ये सीखा कि till 2 second it is going away from origin, and after 2 second it is coming back towards origin. Could you understand that? Yes. Okay, now let's find function of displacement. Give me a minute, please. If anyone got answer, please tell me answers. If anyone got answer, please give me answers. Okay, किसी का नहीं आया क्या? चलो मैं करता हूं. At the place of v, write dx by dt is equal to 60 minus 3t square. Transfer dt other side like this and integrate 0 to 4, 0 to 4. Let's see what we'll get. 6 outside t square by 2, 0 to 4, minus 3 outside tq by 3, 0 to 4. This is 3. 16 minus 0 minus 64 minus 0. 16 into 3, 48 minus 64. How much? कितना आएगा ये? -60. Minus 60 in meter. So at the 4 second, x2 minus x1 is displacement. Means this give you displacement, change in position. Do you agree? Displacement in 4 seconds, huh? So average velocity must be minus 16 by 4 second. So you got it minus 4 meter per second. लेकिन जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे ना, तो आपको डिस्टेंस चाहिए. और डिस्टेंस कैसे निकालोगे? आपको पता है कि वेलोसिटी जो है वो 2 सेकंड तक पॉजिटिव, मतलब 2 सेकंड तक पार्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, एंड देन आफ्टर 2 सेकंड इट इज कमिंग बैक टुवर्ड्स ओरिजिन. मींस to find distance you will integrate velocity with respect to time, but 0 to 2 second, and then you will take mod.
when you calculate from 2 to 4 seconds. Do you understand that? Everyone understood this? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो आंसर आप लोग का आ जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं. 3t square 0 to 2 second dt. Now integrate this plus 2 to 4 second 60 minus 3t square dt with mod. तो जब आप mod के साथ करेंगे तो देखते हैं कितना आता है. दिस इज डिस्टेंस. ओके, तो आएगा तो t स्क्वायर बाई 2, तो वो हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस टी क्यू, है ना. दिस इज 0 to 2, 0 to 2 प्लस मॉड, फिर से वही 2 to 4 माइनस टी क्यू 2 to 4 मॉड. ये कितना आ जाएगा 3 into 4 minus 8 plus 3 into 4 square minus 2 square minus 4 power 3 minus 2 power 3 mod. बताओ डिस्टेंस कितना आ रहा है जल्दी. थर्टी सिक्स माइनस 64 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा. 56. ओके, कितना आया अभी टोटल. Am I right? This is Yes, total. sir. This is total distance. So average speed must be total distance upon total time. 6 meter per second. Understood this question, बच्चों? So this is average velocity. Okay, and this is the average speed. Understood everyone? It's a good question. बना नहीं आप लोगों से, या आप लोगों ने किया नहीं, I don't know. Now be ready for next. Copied everyone? चलो अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं. अच्छा, आज सब न्यू ईयर मना रहे हैं. बहुत ही पब्लिक ऐसी है ना, मुझे समझ नहीं आता कैसी है. खैर छोड़ो. Right, a particle moves along a straight line such that its displacement what is velocity of particle. This question is easy.
Okay, you have 1 minute to answer this. Time over. This is velocity and this is acceleration. To find acceleration कब जीरो? हाँ बेटा, आ गया आंसर? -9. -9 meter per second. Correct. -9. Very good. Very good बच्चों, बहुत जल्दी आंसर दिया. So at 2 second acceleration is 0. Put 2 here. 3, 2 square minus 12 into 2 plus 3. So you get 12 minus 24 plus 3. Minus 9 meter per second. Very easy question, not a big deal, right? Let's solve another question. An aeroplane required to take off a speed of 80 किलोमीटर पर आवर. अनुष्का, तुम लास्ट क्लास में आई थी? No, sir. तो आज क्यों आ गई फिर? लास्ट क्लास में क्यों नहीं आई थी? जरूरत नहीं है रिवीजन की? नहीं सर, उस दिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी. और ये कौन सी क्लास है अपने 11th रिवीजन की? सिंचना, ये कौन सी क्लास है अपने रिवीजन की? 4th, 5th और 10th? Don't know, sir. You don't know, but you attended all the classes, right? Yes. अब आई थिंक तुम लोग के मार्क्स 500 क्रॉस कर जाएंगे. What is minimum force required by engine of plane? चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन. By third equation, you will have to calculate acceleration first. Then you can apply net force equation. So third equation says v square is equal to u square plus 2as. Final velocity is 80. We'll have to convert it into the meter per second. 80 into 5 by 18 square is equal to initial velocity 0 plus 2 acceleration unknown displacement 100 meter. After solving, you will get acceleration 200 by 81. Right?
Now this aeroplane. Moving on a level ground. Okay. Just to take off, just before take off. तो एक्सेलरेशन तो अपन को पता चल गया कि इतना होना चाहिए. इंजन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग बैकवर्ड, राइट? K for kinetic friction, right? So F net is equal to ma कैसे लगाएंगे? Force of engine minus kinetic friction, है ना? Is equal to ma. Is this correct, बच्चों? So force of engine, frictional force is mu into n, mu mg is equal to ma. Ma plus mu mg. 4.43 into 10 to the power 4 Newton. Correct. 100% correct. Now you just put values and calculate. So minimum force required by the engine 4.4 into 10 to the power 4. 4.43 into 10 to the power 4. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Very good. Done? It was an easy question, right? Yes, sir. Okay. हम जल्दी करेंगे, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है. We'll do it fast. है ना? And we cannot do easy questions, right? Now this is question number 4. We'll have to keep searching something new like this. The velocity versus displacement graph and velocity square versus displacement graph given for two particles. सुन रहे हो बच्चों? Find acceleration when displacement is 0. दो अलग अलग पार्टिकल है. एक के लिए v वर्सेस x ग्राफ दिया है. ये 20 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी 0 है जब वो 50 मीटर पर है. And you have another graph. This graph is between v square and x. And values are same. 20 meter per second whole square. And this is 50 meter. You have got two different graphs. How to find acceleration? When displacement is 0. Time is over. देखो आप स्टार्ट कैसे करोगे इतना बता दो. इस वाले में पार्टिकल 1 में how will you start this question? Write the equation of the graph. Very good. So you will write v is equal to, see, you will write y is equal to mx plus c. So at the place of y we will write velocity, and at the place of slope we will write tan theta, that is perpendicular by base, and a minus sign because it is coming downward. At the place of x, and at the place of y-intercept we'll write 20. So velocity is equal to minus 2 by 5 x plus 20. Right.
Now we will apply this formula. A बराबर V is equal to V dV by dx. Can we apply this formula? Right. So A is equal to V means this equation plus 20 into dV by dx means differentiation of this. And when you differentiate this, what you will get, Sinchana? When you differentiate this with respect to x, what you will get? minus 2 by 5. So finally your acceleration is 4 by 25x minus 8. Am I right? Is this correct? Yes, 100% correct. So acceleration is minus 8 meter per second square when x is 0. Could you understand that? Everyone Yeah. understand? Okay. Yes, sir. अब मजा आने वाला है. इसको कैसे करोगे? How will you do this? Again, the equation of graph. Okay, let's make equation again. Y is equal to mx plus c. At the place of y, you will write v square this time. Am I right? And the slope is again minus 2 by 5x plus 20. देखो अभी कितना आता है. Differentiate both the side with respect to x. You will get 2v dv by dx. लो एक बार में ही आ गया. Minus 2 by 5. 2 got cancelled. You got v dv by dx as minus 1 by 5. Means a is equal to minus 0.2 meter per second square. Understood? Shreya, understood? Yes, sir. Okay. This ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है कि अजीब से है थोड़ा सा, है ना? Let's move towards our next question. Mains type के है ना, AT mains. These are tough for NEET, but as it is, questions can come in IIT mains. Same to same. A racing motorboat speeds up in a straight line in a lake. और क्या lake में ही करेंगे ना. From rest. एक बार भी तुमने अनुष्का मेरे को प्रैक्टिस नहीं भेजी है. जो तुम लोग अपने आप को समझ रहे हो ना, वो मैं समझ रहा हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. और तुम लोग जो ओवर स्मार्ट बन रहे हो ना, दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो भी मुझे समझ आ रहा है. खैर, चिन्मयी मेरी बात मानती है और मैं उसकी मदद करूंगा, है ना चिन्मयी? Yes, sir. फरवरी वाले मेंस में जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तू कर चिन्मयी, चुपचाप, है ना? अपना दिमाग मत चला, क्योंकि ये इन लोग का दिमाग अभी घूम गया है. अभी राहुल सर कचरा हो गए इन लोग के लिए. इन लोग को कोई अच्छा टीचर मिल गया है, बड़ा टीचर. कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया फिटजीत जी का. No, sir. वो ऐसा लग रहा है मुझे. रैंक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो 2 साल से पढ़ा रहा है वो नहीं कर पाएगा रैंक इम्प्रूव. ये 10 दिन में कर देंगे.
ये 10 बोल बोल के परेशान, प्रैक्टिस भेज दो भाई। खुद करते नहीं, दूसरों को भी बोलते हैं। पता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, कोई फायदा नहीं होता, दूसरे भी नहीं करते। Okay, try to solve this question. A racing motorboat speeds up in a straight line in a lake from rest. Okay, referring to the acceleration displacement graph for the speeding boat, find speed when it passes a raft at a distance 40 meter from the starting point. तो यार अभी क्या करूं मैं? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। Any idea? Acceleration is changing, but if A is constant with S, suppose acceleration is function of x, what we will get? Nothing. Any idea what they want? Okay, let's see. I have one idea. V dv by dx. Do you remember this? Yes. Transfer dx other side. So integration of acceleration with respect to displacement gives area under acceleration versus displacement graph. Am I right? So what is it actually, what this gives? V dv integration u to v. So v square by 2 u to v. So it gives you v square minus u square by 2. So transfer to other side. 2 into integration of a dx is equal to v square minus u square. And this represent area. So 2 into area plus u square is equal to v square. So 2 into area plus u square under root is equal to v. Final velocity. Could you understand that? Yes, sir. Okay. Yes. अरे पारस आओ बेटा, नींद खुल गई? आईआईटी में जाएंगे, ठंड से जीत नहीं पा रहे। आलस से धन और विद्या दोनों दूर है, और तुम्हें दोनों चाहिए। तुम्हारी जगह मैं हूं, रात भर ना सोऊं। पता नहीं क्या है, बच्चे हैं कि क्या है। तो तुमने आई क्यों गए 35 मिनट लेट? चलो खैर छोड़ो। क्लास 7:30 पे रहती है ना? वाह, ताली बजाओ। बेटा क्लास रहती ही नहीं है, 10 क्लास हो गई है, आज 11वीं क्लास है। So what is area? So area is 20. Put here area 20 meter per second. 2 into 20, u is 0. तो v is under root 40 आ रहा है बेटा, 6.5 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। समझे? मजा आई? Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Now let's ready for the next question. This is question number 6. श्रुति नहीं आई? श्रुति श्रुति को पता ही नहीं होगा. चलो खैर. At the instant the traffic light turns green, a car, it starts with acceleration, start with constant acceleration, 2 meter per second square. At same instant, a truck traveling with constant speed of 10 meter per second overtakes car. How far beyond starting point car will overtake the truck? जल्दी जल्दी करो. B, how fast car be traveling at that instant? सॉरी मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई. आप लोग करके बताओ ये क्वेश्चन जब तक. Giving you 2 minutes. How fast car was traveling at that instant? ट्रक निकल गया, कार 0 से शुरू कर रही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक मस्ट बी सेम. दोनों को बराबर कर देंगे. यस, तो समय मिल जाएगा. फिर वो समय रखेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा. हो गया. मेरा आंसर आ गया बच्चे. How fast car was traveling at that instant? See, draw distance versus time graph for car and truck. This graph you draw and send me later. Right now we should draw car and truck. मेरा आंसर आ चुका है, आप लोगों का नहीं आया मेरे पास अभी तक रिस्पॉन्स. Sorry, I cannot give you more time. See, ये है कार. टायर अच्छे नहीं है. This is car. Initial velocity 0. Let's say ये t सेकंड में इतना चल जाएगी.
S is equal to half at square because initial velocity is 0 and acceleration is 2. तो ये इतना चलेगी. Could you understand that? If you put value of acceleration of car, t सेकंड में कार इतना चलेगी, हाँ या ना? Could you understand that? और भी ट्रक भी पास करा दो. ये ट्रक है. ट्रक ने कांस्टेंट वेलोसिटी से कार को पास किया था. एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक? 10 मीटर पर सेकंड. दिस इज ट्रक. तो ट्रक 10 मीटर पर सेकंड से कितना चल जाएगा बच्चों? टी सेकंड में. मान लेते इतना चल गया. अभी क्या है, ट्रक तो कार से आगे निकल गया था क्योंकि कार पहले रेस्ट पर थी. लेकिन फिर तुम्हें तो पता है कार एक्सेलरेट हो रही है, थोड़ी देर बाद कार ट्रक को फिर पीछे कर देगी क्योंकि ट्रक अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है. कुड यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. Yes. But speed of car is continuously increasing. After some time, let's say t, car will overtake truck. So S dash for truck, you can use this formula, but acceleration of truck is 0. So for truck, you will use ut, that is 10 into t. Now equation B and equation A. Equation B and equation A, this they should have same left hand side. क्योंकि जब displacement traveled by 10 second. बहुत बढ़िया. T square is equal to 10t. T got cancelled to 10 second. After 10 second, they'll pass. Right? For velocity 20 meter per second. Okay, now in equation B, they want velocity of car. So after 10 second, let's use V is equal to U plus AT for car. अबे ट्रक की वेलोसिटी तो वही थी, वही रहेगी. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कार का एक्सेलरेशन 2 था और टाइम 10, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया उसका वेलोसिटी. ग्राफ तुम लोग बनाना बाद में, ठीक है? बना के मुझे दिखा दे. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. A car accelerates from rest at a constant rate alpha. Chinmay, when is your college classes timing? Sir, school will start from January. So I don't know now what will be the time. Means they are not taking any class right now. Now they are taking from 9 to 1. So you are attending or not? Hello? Sir, for 2 hours I attend. Which two subject? Sir, for physics. Okay. And what sir is teaching? Potential and capacitor. Okay. These classes are there in YouTube? No, sir. I attend those classes which you take live. Okay. तो कुछ नया बता पा रहे हैं वो, या जो हमने पढ़ाया उसी में से बता रहे हैं? Something new he is telling or not? Sir, same. Okay. He tells how to write for board exams. So मैंने जो पढ़ाया वो बोर्ड में नहीं बताया क्या मैंने? चल रहने दे, मैं परेशान कर रहा हूँ तुझे. इट्स ओके. बट जो मेरे स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, मैंने बोर्ड के हिसाब से बताया तो है, और अभी असाइनमेंट जो मैंने दिया है वो बोर्ड के हिसाब से. चिन्मय, यू गॉट वन असाइनमेंट राइट? Yes, और वन sir.
If you solve those questions, you will get 100% marks in both from optics and wave optics. First time did deaccelerate a constant beta to come to rest. And if the total time velocity is t, evaluate the maximum velocity reached and the total distance traveled. It's the easiest and fastest way to solve this problem. Last year भी कराया था मैंने, याद है आप लोग को? Is graph method. ग्राफ मेथड में क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी वर्सेस टाइम. क्यों अनुष्का तुम ऑप्टिक्स में आ रही हो? इवनिंग में जो सर करा रहे हैं बैबो सर. Yes, sir. और तुम चिन्मय? Yes, sir. थीटा 1 थीटा 2. Vmax. Why I made two different angles? Because acceleration is alpha and retardation is beta. Okay, that's why I made two different angles. I am assuming this time is t1 and this time is t2. And it is given that t1 plus t2 is t. Okay, so can you tell me what is tan theta 1? Vmax upon t1, and this must be equal to alpha. Do you agree? Yes. Tan theta 2 is Vmax upon t2, and this is beta. Equation B. What else we can do? We got alpha and beta at least. Sir, T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें. हाँ, t1 is equal to Vmax by alpha and t2 is equal to Vmax by beta. Now put value of t1 and t2 in this. T1 plus t2 is equal to t. Because t is given, t1 and t2 we assumed. So Vmax by alpha plus Vmax by beta is equal to t. So we got Vmax. Take Vmax common. Vmax is equals to alpha into beta upon alpha plus beta into T. करेक्ट ये ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से. अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा इज इक्वल टू टी. अल्फा बीटा टी अपन. ओके, आई थिंक ये सबको समझ आया ना? Everyone understood this? Yes, sir. Now they want total displacement. How to find total displacement? Area under VT graph gives total displacement, right? So 1 by 2 height into base. This is total displacement. Vmax अभी निकाला हमने. What is Vmax? Alpha beta t upon alpha plus beta into t. So final answer is 1 by 2 alpha beta t square upon alpha plus beta. This is your final answer for displacement. Understood, bachcho? Yes, sir. There is another way. There is another method to solve this question. We'll try by that method. You can try by that method by your own by using equations. Okay. Now in the next class, I will teach you motion under gravity. Okay. And this class will be daily now onward. This revision class will be daily. Will be daily. पारस को बता दूं 7 AM to 8 AM. और इसमें टारगेट मैं कल आपको बताऊंगा. हमें कहां तक करना है टारगेट टिल 31st January. Tomorrow I'll tell you. Okay. So that's it for the day. Thank you. थोड़ा सा टाइम. Okay. You may leave now. Bye.
Bye, sir.